causes more pain, but I'll do it slowly. Are you okay? Can we try the other instrument so that the pain is a little bit less, please? So this is day 7 now, and I'm already in pain. yeah, I'm sorry, Baba. Please bear with us for a little bit. We've actually soaked it a lot, and this thing needs to go. Now Priya's going to try and see. Is this any way better now? No. Is the same? Yes. It looks better on the video though. Because of the fact that it looks golden. Do it manually only. Do it manually? No, I'm doing it manually only. She's just trying to reduce your pain with that. It's usually a little painful around this area. Oopsie. Okay. We'll go a little bit this side. Ouch. A little bit this side. So once I'm done with the back part, yeah, that's fine. Now you're not going to have less pain. It's not going to hurt you much now. Can you? Yeah. Okay. Yeah, you can put a little bit more. Sorry, Baba, ho gaya. Sorry. This is something we need to do. Yes. Finally. How does it feel? Yeah, it feels good, right? Okay. So you can have a look at how you're looking. So it's going to go in a lot, okay? It will go now? Yeah, bahut. It will go in a lot, much longer. See your Priya. Can you see the difference already? See the balance of the face. See how your face has become angular. Can you see all of that? Yeah. This height we've increased a little bit, subtle. It's become more narrow. Look at this. It was broad. It will reduce a lot. You need even a little bit more. Yeah, because the shape is totally changed now. I can't handle this drastic change. Not drastic. Look. We're going to show you one by one. Yeah, I can see the improvement. It's huge. Yeah. It's nice. It's only 5 millimeters everywhere. That makes that effect, you know. 5 millimeters here, 5 millimeters here, 5 millimeters here, 5 millimeters here, and there you go. A lot of change. It's subtle, but and it's very elegant. It's very nice. Look at your side view now. Can you see the improvement? There. And again, in this, you'll be able to see a lot of improvement. Look up and see. Yeah. You can see the way it's improved. You want to call your mama? Is she outside? She's upset. She's upstairs, is it? Yeah, we call her. We call, her mom. Let them have a look. Because your mom, this is something, if you had a short forehead, then still this thing would have been all right. But because of your long forehead, now what we've done will make it look really nice. She's coming. बंद परेड मैं आपको दिखाता हूँ पहले वाली फोटो. मैंने बहुत अच्छे से देखा है. मैंने बहुत फोटो ली है. डॉक्टर मम्मी लाई है मेरे को. ये बेटी ने नहीं बोला था कराने को. हाँ, लेकिन मम्मी भूल जाती है ना. मम्मी देखेंगे कि थोड़ा मिस्टेक है कि नहीं, कहीं 3 मिलीमीटर. मुझे सुना रहे हैं इनडायरेक्टली. आप बताओ. हाँ. इम्प्रूवमेंट में आपको मतलब ये जो है यहाँ पे मैंने बताया था 5-6 मिलीमीटर्स, यहाँ पे 5-6 मिलीमीटर्स एंड वो शेप. और ये जो है अभी ये कम होगा बिकॉज ये अंदर जाएगी. यहाँ पे सूजन है, इसलिए हम वी हैव पुट द बैंड देयर. और ये जो हाइट वी हैव इंक्रीज अ लिटिल बिट हाइट ओनली. प्रोजेक्शन बिकॉज आर वोंट गुड बिकॉज दिस वाज बिग ना. सो अकॉर्डिंगली दिस शुड बी लिटिल बिट लॉन्गर. बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं होएगा कि यहाँ से कम और ये जो होता है चोंच जैसा होता है. नहीं चोंच मतलब शार्प नहीं ऐसा नहीं होगा. ये जो है ग्रेसी का ये जो
यहाँ पे मसल्स हैं, ये एज इट इज़ रहेगा? एज इट इज़ रहेगा, जो अच्छा था उसको तो हमने, और स्कैन ले लेंगे आज शाम को। वैसे शी इज़ गुड टू लीव टुमारो बट शी विल वेट एनीवेज, कुछ करेंगे विथ यू। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है इफ़ यू आस्क मी। सटल आप कह रहे हैं कि मैं दांत को ऐसे कर दूँ? डॉक्टर मैं ना अभी दोनों टीथ ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्यों? नहीं ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, बिकॉज मसल्स को डिटैच किया है ना हमने, तो वो टाइम लगेगा अटैचमेंट। मैं क्यों बता रहा हूँ, नहीं तो चपाती मत खाओ, रोटी मत खाओ। मतलब नॉर्मली ईटिंग का नहीं कह रही हूँ, नॉर्मली जैसे पॉस्चर होता है। माउथ ओपनिंग में दिक्कत ही रहेगा आपको, नॉर्मल माउथ ओपनिंग नहीं होगा नहीं अभी, है अभी, वो धीरे धीरे ठीक होगा। मेजर सर्जरी है ना, देखो 5 मिलीमीटर्स किए हमने, बट अप्रोच प्रोसीजर बोन में जो कट है सब कुछ टेक टाइम, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है परमानेंट एक पेन, अनईजीनेस है यहाँ पे। अच्छा, सब नॉर्मल होगा। हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ और बताइएगा डॉक्टर, मैं वैसे तो बिल्कुल स्ट्रेट ही सो रही हूँ, ऐसे ही बेटर है। हाँ, बट मेरा ना ये जो एरिया ना पेन करने लग गया है, तो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा What she posture getting now? क्या रखूं। Only Descent has started since she's telling he's maybe we can put her on paracetamol. मीन्स मेरे को पोस्चर नहीं समझ आ रहा एग्जैक्टली कि मुझे कैसा रहना चाहिए। लेटना तो आई नो कि मुझे ऐसा रहना है, इधर नहीं देखना है। सी अगर थोड़े से आप लेफ्ट या राइट साइड भी टर्न हो जाती तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर जैसे सोते हुए ऐसे जैसे हाँ, वैसा नहीं सोना। नहीं कर रही हूँ। प्रेशर नहीं। वो 1 मंथ के लिए मत करो, नहीं वो तो मैं कर ही नहीं रही। बिकॉज इफ यू डू दैट देन इट विल नॉट हील। ठीक है, सो डाइट यू अंडरस्टूड, ओरल केयर यू अंडरस्टूड, you have to brush your teeth, don't rinse much, don't eat chewy food, other than all soft solid food you can eat. All the sutures will dissolve, no need to remove. Easily हो जाएगा मेरा। 1 month तक रहेगा dissolve. Okay. ठीक है, चलो। Hey, உங்களுக்கு ஸ்கேன் எடுத்துருந்தீங்க, we can take up post-op scans as well. आपका परसों सब जगह 5 मिलीमीटर्स ही किए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं किया है। कॉन्टोरिंग जैसे होता है ना। हाँ, लेकिन आपको इट लुक्स मोर फेमिनाइन, मोर। तो ये जो है ये अंदर होना है, अपने आप होगा अंदर, ये नहीं रहेगा अभी आपको बाद में, ये और अंदर ऑलरेडी अंदर चला गया और चले जाएगा। आई गेस ये भी थोड़ा कम होगा डॉक्टर। बहुत कम होगा, हाँ। 6-7 days इज वेरी अर्ली। आपका देखो ओनली स्किन एंड फैट, स्किन हीलिंग 7 days, फैट ऑल्सो हील्स फास्ट, मसल सिन्यू बोन ऑल टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बोन टेक्स मिनिमम 4 weeks minimum. So your work is mainly on the bone, secondarily on the muscle, and literally only some tightening on the soft tissue, and no work on the skin. Therefore the healing period is longer. ठीक है, all right, bye bye. और मेरा स्टिचेस कल को कल नहीं, परसों परसों मॉर्निंग 10 o'clock. ठीक है, ओके।